please let me know when to start. Am I audible? Yes, ma'am. Please let me know when to start. 11:35. 11:32. We start 11:35. संपदा यूट्यूबच्या चॅनलमध्ये असा आवाज काय लागला बघ जरासा. काय वाटतं का तुला? ओके, नाही झालं मी हे सगळं चालू आहे यूट्यूबला, तर तो आवाज खर्र वाजायला लागला. हो, लिंक नाही पाठवलं कारण ऑलरेडी त्यांनी बनवली आहे ना लिंक, त्यामुळे मला करावंच कंपल्सरी लागलं. हो हो, नाही नाही हो. काय ते नाही 152 झालेच आता फक्त. हो बघ ना जरासं चेक कर ना थोडंसं आवाज. ओके ओके. Yes. Thank you. Good morning, everyone. I, Assistant Professor Shweta Bajpayee, thoroughly pleased to witness you all here. It's my pleasure to address you all to attend this national level webinar on venture capital organized by Institute GANGA Trust, Degree College of Arts, Commerce and Science under the guidance of IQAC and Department of Commerce. I hope the recording has started, ma'am. Yeah, ma'am. I think it's still in process. I need to repeat it again. It's not yet started. We have not got the message. It's buffering, ma'am. You can see. Yes, I can see that. Let the recording start and then I'll again start with the introduction. Sure. काय बोलली तू? हॅलो. हो. Is my screen visible? Yeah, the screen is visible. अरे बापरे, मग आता फॅन वगैरे बंद करू का? काहीच नाही, मी एकटीच बसले बंद. Anubhav sir, you just wait. I'll first share my screen and then we'll start. बघ आता एकदा. Anubhav sir, please stop presenting. Okay. ओके ठीक आहे. The recording has been started, Shweta, ma'am. Yeah, I'm just. A very good morning, everyone. I, Assistant Professor Shweta Bajpayee, thoroughly pleased to witness you all here, and it's my pleasure to address you all to attend this national level webinar on venture capital.
organized by our institute GANGA Educational Trust College of Arts, Commerce and Science under the guidance of IQA and Department of Commerce. A very warm welcome to respected Principal Ma'am Dr. Bhavika Karkera. She would be with us in some time as right now she is in an important meeting. A very warm welcome to our respected guest speaker, Mr. Anubhav Shukla, sir. A very warm welcome to all respected lecturers and senior dignitaries and my dear students. I would like to thank our respected Principal Ma'am for giving us consent to organize this national level webinar on venture capital. On behalf of our institution, I convey my regards to Mr. Anubhav Shukla sir for accepting our invitation and coming over to enlighten us about venture capital and its scope as a career option for students. To tell you more about Anubhav sir, he is a senior private banker with a demonstrated history of working in a wealth management segment of financial service industries. Currently, he is managing wealth of HNI clients. He is skilled in banking, team building, investment advisory, team leadership, and cross-cultural communication. He is a postgraduate from XLRI Jamshedpur in finance. He has worked in an investment advisory business, portfolio management services, alternative investments, mutual funds with direct equity purchases. He has assisted a team of senior relationship managers and senior business development managers in North India. Welcome, Anubhav sir. So, before I start this session, I would just brief about some few rules. I would request you all to please keep yourself on mute, and in question answer session, do ask your queries related to this webinar. And while you are asking the queries, you are requested to switch on your camera and unmute yourself. You can raise your hand whenever you want to ask. So as in the person in the queue, we will be asking you all to ask the questions. And now I would request you all to kindly switch on your cameras so that before starting this wonderful webinar, we could capture a few photos for memories. Yes, everyone, please switch on your cameras. We'll just capture a few photos and then we'll start the webinar. Students, please request you. Kindly mute yourselves. Thank you. Please hold on. Just taking the. You're gonna hear my voice when I shout. Kindly mute yourselves. It's my life. Thank you so much, everyone. I hope Priya ma'am, you have taken the photos. Neha ma'am, you have taken the photos. Yes, ma'am, I've taken. Okay, thank you so much. Now, Anubhav sir, the stage is all yours. So Can I yes, share my screen now? Yes, sir, you can. Thank you so much for joining us, and we are looking forward for a wonderful webinar. Thank you. Thank you. Yeah. Hi. First of all, good morning, everybody. Thank you. Thank you, Shweta ji and respected faculty of the college for giving me this opportunity to interact with you. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. Thank you, everyone, including the students, to to log on to this. Kindly
Mute if I can yourself. request Mr. Shreyas Singh to keep his phone on mute. Okay, thank you. And I can see, sir, there are many people who have also joined from outside India as well. Thank you for taking some time out. And okay, so the so we have a larger audience. If we can maintain a discipline over here, I mean, I think it will be very easy for us to conduct this. Okay, thank you. Now, see, venture capital as a topic I chose because this is something that I'm working on as of now, and I like to do more and more research on the new topics and the work that is going on currently. In last 2 years, it is a very popular name. Private equity and venture capital space is actually buzzing everywhere, especially India, which is actually a second largest market for venture capital funds. I'm sorry to interrupt you, sir. Are you sharing your PPT? Because that's Yeah. not, the screen is not visible right now. Could you please pin Are, your... are you getting it now? No, sir. We are able to see you. Yes, sir. Now we can see that. Now you can see that, Yeah, right? you can do a screen. I slideshow. wanted to speak a bit. So in between, you can let me know what is going on. I am only able to see my screen. I am Yeah, not able sir. to see you guys. Sure, sir. Okay. You can do a slideshow, sir. Yeah. So I am starting it now. Yes, sir. Is it visible now? Yes, sir. It's visible and you're clearly audible. Thank you. Okay. Okay. So see, this topic, venture capital, is actually a very high-end finance topic. It requires many years to understand the market, to understand the basics and fundamentals of this topic. So what I wanted to do was, because keeping in mind the audience, it is actually graduation. Most of the students are from graduation. So it was important for me to to touch upon the basics of this market first, and that is what I intend to do. If you have any doubt, any question that you want to ask, please park your query. I think we have already kept around 20 to 30 minutes for asking questions. Now, I would like to start with a famous brand, which is Walt Disney. I think most of us would have seen this, and most of us know this brand. Everybody would be interested in going once in a while to these places, to theme parks made by them. But I would like to let you know that there was a time when the person who started this Walt Disney brand had to go to several doors for initial round of funding to start this concept. And you would be surprised to know that almost 300 times he was turned down. He was not given any kind of single penny to start a brand like this. Now this company is all of us know what this company is. We know this famous cartoon Mickey Mouse. Now this Mickey Mouse is quite famous. हमारे अपने बचपन में भी हमने इसको काफी देखा है, और even today also, मतलब the kids are just love this cartoon character. So unless this cartoon character became hit, the gentleman sitting over there, he had to struggle a lot to build a brand, to build a concept that he wanted to share with everybody. Now the other I'm sure this brand everybody is able to recognize is Apple. Currently almost everyone in the smartphone space or tablet or a computer space, whoever is using would love to have a brand of Apple on their desktop. This iPhone is actually now running in a 12th series or 13th series. So previously 13 or 14 launches, 13 or 12 launches that have happened have been bumper hit. Now, even there in the Apple, the founder of the Apple, Mr. Steve Jobs, he had to struggle to get initial round of funding.
Even there is a news that when he wanted to start his career or business in computers, building computers and applications, he had to borrow his first computer for 30 credit of 30 days. So that was the situation. Now you can see if this would not have happened, the venture capital backed companies, almost everybody is using. We are interacting on this platform, which is Microsoft. I'm sure ki you guys have logged in from your phones. I've logged in from Windows. It is a product of Microsoft. It was VC. Now this data I'm sharing is of 2019. So currently Apple is ahead of Microsoft in terms of valuation. But all these companies have one thing in common. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, they were all backed by VC at one point of time. So Walt Disney, which had which was denied 300 times for loan, is currently valuing at around $70 billion. And this is the data from 2019 year ending. Apple is currently more than $1 trillion. $1 trillion is, अगर आपको मतलब अगर मतलब रूपी टर्म में अगर आप देखें तो $1 billion is around, अगर आप एक्सचेंज रेट $1 is equal to 75 rupees मानते हैं तो $1 billion is around 7,500 crore और $1 trillion is 1 lakh crore. So it's a huge amount of money that they have gathered. Important was that at that point of time when they wanted to begin, if they had not got initial support of money, they wouldn't be at this place. Now, why it is so important for these companies to survive? These companies are actually now the backbone of the economies. आप Amazon को देख लीजिए, आप फोन पे बैठे बैठे कुछ भी घर पे मंगवा लेते हैं. फेसबुक आप लॉग इन करते ही हैं डेली. आई थिंक बहुत सारे लोगों की तो मॉर्निंग शुरू होती होगी फेसबुक से. Then Apple is something that everybody aspires to have, and Microsoft that we have already spoken of. Now coming on to some of the Indian startups. So once upon a time, these companies, Walt Disney, Apple, they were all startups. And now let's come to the Indian startups, Indian space. So this unicorn term, which I mean, I'm sure कि आप लोग screen पे देख पा रहे हो, Zomato, Flipkart, Baidu, Ola. These are the 4 very large companies of India currently, and I'm sure day in day out आप सब ये use कर रहे होगे. Zomato अभी recently में ही उनका IPO भी आया था, and these companies they are all backed by some venture capital funds, private equity firms. Now I'll also differentiate between private equity firms and venture capital in the later stage of my presentation. But as of now, it is important to understand ये जो startup है इंडिया में, इनको back करने के लिए कोई बैंक नहीं आता है, because बैंक ज्यादातर operational businesses को fund करता है, which is actually not in the initial stage of business ideation. They are in somewhere in the middle of their operation. So initial seed fund जो है वो banks नहीं देते हैं, and majority of the time their funding is debt financing. So what they do is they give you a loan and then they seek interest out of it. But if entire economy, entire world will work upon this funda, then you will have no incentive to start a new idea. So that is where the venture capital firms come. Now, the success of these venture capital funds is also very important to discuss. So Zomato, आप देख सकते हैं, Zomato was a startup. This was started by few IM graduates. Or I remember Mr. Goel was mentioning about this in one of the seminars, that he landed up in a job, in a sales job he did not like. So he was sitting in a cafeteria and with his friend. His friend, मतलब he shared his problem. यार IM से निकलने के बाद, MBA करने के बाद, still I'm, doing a sales job which is actually not good for me. I don't like it and all. So
why not, अगर अपना खुद का business होता तो क्या मजा आता. So the guy who had started Zomato, who was working on it, he gave him a proposal. He said, "Ki let's, I would allow you to join my company. अगर आपके पास समय है, if you want to come to our office and see if it's possible for you." So that is when they decided to build this brand. And initially उन्होंने hiring कहाँ से करी? उन्होंने hiring करी जो डिलीवरी करने वाले बॉयज थे, उनकी हायरिंग करी इन्होंने डोमिनोज के पिज्जा बॉयज. Those who were not happy with the pizza chain and all, they were looking for some kind of job, so they started hiring those people. Now this Zomato, which is more than all the restaurants of India put together, plus all the big and large 5-star hotels in India, they are currently valuing at around 1 lakh crore. So it's a huge achievement for them, and I'm sure that this company will, in the coming years, it will be growing, leaps and bounds. But initially, जो आप term देख रहे हो ऊपर, Indian unicorns. तो unicorn एक imaginary एक horse है जो कि white color का होता है और जिसके head माथे पे जो है एक पॉनी टेल सी बनी रहती है, एंड देन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इट नेवर स्टॉप्स. नाउ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, ऑफ कोर्स द यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया, द यूनिकॉर्न स्टेटस जो है वो किसी भी स्टार्टअप के लिए एक माइलस्टोन होता है. सो यूनिकॉर्न हमारे फाइनेंशियल टर्म में इट्स कॉल्ड $1 billion की वैल्यूएशन. सो वैल्यूएशन ऑल्सो आई विल कम ऑन टू दैट इक्वेशन, आई विल कम ऑन टू दैट. But it is important for us to know कि when we say कि unicorn क्या है. Unicorn is एक milestone है कि $1 billion की valuation आपने कर ली है अपनी कंपनी की. That means कि you have been somewhat successful. Now अगर हम 2008 की बात करें तो there were around 7,000 startups in India. Now in 2018 there were around 50,000 startups in India. Do you think that it was possible without a financial backing? I don't think so. Now, in last 2 years, जब से कोविड हुआ है, कोविड से पहले भी जो कंपनीज थी जो मोबाइल ऐप बेस पे बिजनेस पे जा रही थी, टेक प्लेटफॉर्म पे जा रही थी, they knew कि मतलब as the world will progress with 4G coming into picture and 5G coming into picture, people would like to buy on their phone, not visiting a store and spending a time. Because time is a luxury nowadays, and it also the application which is built in such a way that it gives you a lot of options. Plus, it also saves your transactional cost. Like in Flipkart, you can browse in so many books from so many categories, and you can easily purchase any book. Similar is with Zomato. You can browse as many restaurants as you can in your vicinity, and you can order with whatever dish you want. You don't have to search or hunt for a restaurant to have your breakfast, dinner, or a meal. Now, the same case is with Ola. Ola was started by Mr. Bhavish Aggarwal. Now, Bhavish Aggarwal, उनको भी जैसे कहते हैं कि Newton was sitting under an apple tree, and suddenly an apple fell on his body, and he realized that there is something called gravity which is existing. So this is what happened with Bhavish Aggarwal also. He was traveling to some place, and he was using cabs to travel from one place to other place. Then he realized how difficult it is to find a cab in India. So he said, he thought of building a platform, tech platform, wherein it becomes easy for anybody to book a cab, whether it is within the city or with intercity. Now, these concepts became instant hit. Now, Ola is also built, to let you know, I'm sure many of you must be knowing, Ola is now is going to launch from tech-based platform to now manufacturing electric scooter. They have done a great job, I'm sure. So coming on to Byju. Byju is again, to tell you the success story, Flipkart was valued around $32 billion. Byju is the second most valuable startup of India.
It is around $21 billion, the current valuation, and it is expected to go for an IPO for about $50 billion, which is quite a huge valuation. Okay. So अभी ये क्या हुआ है कि ये जब टेक्नोलॉजी जैसे 5G 4G आ रहा था तो these companies were coming up. Now कोविड ने एकदम से इनमें एक्सेलरेशन डाल दिया. Now COVID situation is, since last year we are struggling, the world is struggling from this. Now the COVID situation has added more unicorns in India. So before 2018 there were around 8 to 9 unicorns. Unicorns means $1 billion के valuation वाले startup. Last year 2020 में there were around 11 unicorns added new. So anything that is coming onto the tech platform was instant hit. Anything that is actually reasonable good also. So many of the companies, they copied the concept from Silicon Valley, which again I'll come to that. I'll let you know that which is the company, which is the place from where this startup idea has come into the picture. So Silicon Valley एक जगह है अमेरिका में which is actually famous for this, and it had developed an ecosystem long back, almost 30-40 years back, to motivate the young minds and hire the people from the tech platform and build disruptive technologies, build disruptive brands which will become the MNCs of the new world. Now coming on to the Indian unicorns, last year 11 unicorns added हैं. This year 19 unicorns will be added. So आप ये देख सकते हो कि since the time the startup revolution began in India, we had added only let's say 8 to 9 unicorns for about 14-15 years, 16 years. In last 2 years we have added around 30 unicorns. अगर आप में से जो भी ये सुन रहा है students, if you guys are not paying attention to this sector, this segment, startup and the venture capital firm, I'm sure you are going to lose a big opportunity, because जो चीज 10 सालों में 15 सालों में हो रही थी, last 2 years it has increased a lot, and I'm sure going forward also, given the policy of the government, the tax exemptions and the support that is coming from venture capital firms, not only in India but also from outside India, this startup revolution is going to make us proud. It is already the second largest in the world, let me tell you, in terms of the new startups that are coming up every year. So we are only behind China in that aspect. Now in that aspect I'm talking about. So I'll give you an example of these 4 branches that you are seeing as of now: Nykaa, PharmEasy, Pine Labs, and Unacademy. Am I audible, Shweta ji? Yes, sir, you are. Hello? Yes, sir, you are audible. Okay. Thank you. So Pine Labs, अगर आप देखोगे आज कहीं भी आप अगर CCD में जाओगे या आप किसी भी कॉफी मतलब जहाँ कॉफी आप पीना चाहोगे, बारिस्टा हो गया, CCD, even the petrol pumps also, you will see a Pine Lab की एक आप मशीन देखोगे जहाँ पे आप कार्ड अपना स्वाइप कर रहे होगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. Now this is actually a profitable startup, and it is going to get improved over a period of time a lot. Given उसका रीजन मैं बताता हूँ. उसका रीजन ये है कि सबसे पहली बात तो इंडिया में अभी भी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों की परसेंटेज बहुत कम है. So this segment is already going to get increased. Now where they will swipe on these platforms. Pine Labs is supported by Sequoia Capital. It is one of the very successful companies of India. दूसरी चीज आपको पिछले 2 साल में आपने देखा होगा PharmEasy. PharmEasy is one platform, tech platform, but it got maximum number of the visitors among all in last 2 years among all the new startups. उसका रीजन ऑब्वियस है. फंडामेंटली अगर आप देखें कि कोविड ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी where everybody wanted to have some medicines
at their doorstep. They were scared to go and purchase it from the retail stores. Everybody wanted to have these medicines delivered at their own place. अभी आपने अगर देखा हो कि not only that, but the second wave that came, deadly second wave that came this year in India, after that, around that period of time, many of the people who were using pharmacy, they were searching on pharmacy for a doorstep blood collection guy or a testing facility. थायराइड टेस्ट से लेके ब्लड टेस्ट से लेके आपका विटामिन का लेवल के टेस्ट से लेके एवरीथिंग people wanted to have on their doorstep, because it was very dangerous to visit to the diagnostic centers because there was a high probability of getting affected by COVID. Now, PharmEasy ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और उन्होंने कुछ महीने पहले एक इतना बड़ा एक्विजिशन किया है डायग्नोस्टिक स्पेस में, which is actually a history. एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसमें 3-4 साल से ज्यादा का हिस्ट्री नहीं है, उसने पिछले 20 साल पुरानी एक कंपनी थायरोकेयर को खरीदा एट अराउंड 4,500 करोड़, which is, and that now if you download PharmEasy, you can order your medicine from that app and get it delivered at your doorstep. You can also book an appointment for a test, for all kinds of tests, not the major ones which you require at the critical illnesses case mein. Otherwise, all the basic tests that you can order, you can get it at your doorstep. You can order it from PharmEasy. So that was a strategic. Now imagine if this was not backed by a VC, venture capital fund, would it be easy for PharmEasy to acquire a company which is so large and so big and so old like a Thyrocare? I'm sure कि आप लोगों ने YouTube में मिस्टर वेलू मनी के बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे, उनकी वेबिनार सुने होंगे. He's a very good fine speaker. Now coming on to Unacademy. Unacademy एक ऐसी कंपनी है जिसका ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है. I'm sure कि मुंबई वाले तो जानते ही होंगे सचिन तेंदुलकर को. और Unacademy is one place wherein you can get all class 4 से लेके 12 तक की सारी कोचिंग, सारे ट्यूशंस आप वहीं पे कर सकते हो. You don't have to visit to any place. So the COVID situation, which actually disturbed a lot of our daily activities, actually got continued because of the help of these tech-based platforms. Now these tech-based platforms got money from where? The venture capital. Now we'll come on to that. तो हम लोग ये बात करते हैं जब भी कि $1 बिलियन की कंपनी हो गई है, और जब हम ये कहते हैं कि ये यूनिकॉर्न बन गई है, तो ये होता कैसे है? तो ये जो आप राइट साइड में ग्रीन देख रहे हो, पोस्ट मनी वैल्यूएशन, दैट एक्चुअली डिफाइंस द वैल्यूएशन ऑफ द स्टार्टअप. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी चल रही है, स्टार्टअप कंपनी है जिसने सीड कैपिटल ली थी, नाउ दे आर सक्सेसफुल फॉर 5 years, suddenly they got a new opportunity of acquisition, like PharmEasy got an opportunity of acquiring Thyrocare. So they got money from some VC, venture capital. So that capital gets added to their valuation. Why? Because it is in the form of equity. It is not in the form of debt that increases their liability. It is in the form of equity. So now pre-money valuation plus cash from the series, whatever, 1, 2, 3, whatever cash they get. So series भी होती है इनमें, series 1, series 2. That means कि आपको जब आपने आइडिया आया आपके पास में, तब आपने पहली बार एक सेटअप लिया, कुछ लोगों को हायर किया, सॉफ्टवेयर लिए, दैट इज व्हेन यू डिड. देन सेकंड इज अबाउट प्रोडक्ट, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया. थर्ड इज अबाउट ऑपरेशनलाइजिंग और कमर्शलाइजिंग योर आइडिया, देन सो फॉर. नाउ अगर ये जो आप डार्क ब्लू देख रहे हो, प्री मनी वैल्यूएशन, एंड द ऑरेंज वन, इसको आप जोड़ते हो तो बनती है पोस्ट मनी वैल्यूएशन, which actually tells the valuation of a startup company. Now I already told you कि ये जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हो, आप ये सोच सकते हो कि ये तो दूसरों से मांगा हुआ पैसा है, ये आपकी वैल्यूएशन में कैसे इंक्रीज कर रहा है. तो भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी और डेट में बहुत अंतर होता है. डेट इज when you take the debt, you actually increase your liability and all, and I'm sure कि equity also increases your liability, but it is not
it is not coming in the form of fixed obligation. It is something that, okay, it's a risk capital that is being added by the investor. They are aware of this. They know that there is a huge opportunity of upside potential. So that is why they are coming and investing in your business. It is not that they are not expecting the return out of it, but they know the risk. It is assumed that they know the risk of getting into a startup company, and that is when you actually become a post money valuation. जो आपका आता है वो इन दोनों के sum series से आता है. So when we are saying a company is $1 billion or a unicorn, that means कि जो green side आप देख रहे हो post money valuation, that is actually the correct interpretation. अच्छा, अगर स्टार्टअप अगर आप देखो तो ऑफ कोर्स किसी भी कंपनी का ये बिजनेस लाइफ साइकिल है. आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हो, whether you are a services company, manufacturing company, or any tech-based platform. You have to go through these first four steps, I'm sorry. The first four steps are startup, growth, maturity and revival. Now, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कोई भी कंपनी एक ऐसे स्पेस में जब आती है तो आप ये जैसे देखते हो पेटीएम आई थी. When Paytm came, it was the only tech-based platform which मतलब it became an instant hit. Every पान वाला से लेके रिक्शा वाला से लेके जो बॉटम लेवल इकोनॉमी में जो सबसे इकोनॉमिक लेवल में सबसे बिलो पॉवर्टी लाइन का भी जो सेगमेंट है, वहां से लेके अपसाइड मतलब जो हाई क्लास भी है, सबने पेटीएम डाउनलोड किया था. Now in that space, which is the transaction based banking, in that space we have PhonePe, BharatPe, we have Freecharge, we have so many names, we have Bhim UPI coming. So there is so much of competition कि एक समय के बाद स्टार्टअप ग्रोथ और मैच्योरिटी के बाद रिवाइवल के समय आते हैं, जब आपको एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए होती है टू ऐड सम ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो और acquire some of the successful businesses in your segment. जैसे कि आप ये मान के चलिए व्हाट्सएप एक ऐप है जो कि मतलब हम लोग सभी यूज करते हैं, और आई एम श्योर कि आप आज जानते होंगे कि आज वो फेसबुक ने उसको एक्वायर कर लिया. सो इनिशियली व्हाट्सएप वाज बैक्ड बाय सिक्वेयर कैपिटल एंड इट वाज फेसबुक ने देखा कि भैया ये व्हाट्सएप की जो ऐप है, अगर हमने इसको एक्वायर नहीं किया तो ये हमारा बिजनेस ले जाएगी. सो इट माइट बी पॉसिबल कि सो फेसबुक वांटेड टू रिवाइव इट्स बिजनेस. दैट इज व्हेन दे गॉट सम मनी, दे यूज देयर ओन मनी एंड दे बॉट WhatsApp, and it was around somewhere around $19 billion. $1 billion is again 7,500 crore, so it was around, you can say it was around 1.4 lakh crore के आसपास की परचेज थी. It was not a simple thing, very huge money. अब है क्या चीज कि अगर आप ये बिजनेस लाइफ साइकिल में हो तो at different stages you require different kind of capital. Now when you are at the maturity stage and you want to do a revival and all, when you want to increase the portfolio and all, that is when you require a different set of investors. उन इन्वेस्टर्स का आउटलुक थोड़ा अलग होगा, एक्सपेक्टेशन अलग होगी. स्टार्टअप लेवल पे आपको वो हो सकता है वही इन्वेस्टर्स हेल्प ना करें. सो यू गो फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स जिनकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है, जिनकी एक्सपर्टीज अलग होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ भी वो आते हैं. जैसे वेंचर कैपिटल है या सीड फंड्स, एंजल फाइनेंसर्स हैं. दीज पीपल दे हैव अ डिफरेंट एपेटाइट, they have a different attitude. You meet a new angel investor or a venture capital fund manager, you will see their word is entirely different. They are seeing the world going into a different direction altogether. आप उनसे बात करोगे, they will let you know. अब imagine करिए कि now Baiju is such a large company. Baiju बहुत बड़ा आज की डेट में इंडियन टीम को स्पॉन्सर करता है वो, which is huge. मतलब today when we are playing in England, we have a Baiju's t-shirt on our Indian cricket team, which is a huge thing. आप ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? ये फंड्स आ रहे हैं आपके ऑपरेशनल सक्सेस से,
आपके और वेंचर कैपिटल फंड्स के, बिकॉज दे नो कि दिस आइडिया नीड्स टू गेट मार्केटेड एंड दैट इज द फ्यूचर. 4-5 साल पहले या 10 साल पहले nobody would have imagined, very few people would have imagined कि ऐसा भी समय आएगा जब बैजू नाम की कंपनी या एडटेक बेस्ड का स्पेस जो है इतना ग्रो कर रहा होगा. I'm sure कि at that point of time some craziness or madness is needed to to believe in such concepts. So same kind of people, those who believe in madness or who believe in something revolutionary which is coming up, some people, like nowadays people are talking about artificial intelligence, machine learning, data analytics, big data analytics. So those kind of people, they are doing a lot of research in deep tech. So if you go and meet them, the chances of getting your startup funding is very high rather than going to a bank. अब इमेजिन करिए आप SBI बैंक के ऑफिस में आप गए और आप बता रहे हो कि आई हैव अ रिवोल्यूशनरी आइडिया व्हिच इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड. बैंक मैनेजर क्या करेगा? वो आपको चाय पिलाएगा, गेट खोलेगा और कहेगा नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, because he is not ready to accept those ideas because that's not his expertise. Now अब आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप अपने मतलब इस तरह के महान विचारों को या आइडियाज को भूल जाएं, या फिर आप एक कन्विक्शन के साथ में उन लोगों के पास में जाएं जो एक्चुअली में आपकी आइडियाज को, जो आपकी ग्रोथ को, जो आपके पोटेंशियल को, जो मार्केट को समझते हैं, those who understand the technology. So if I'm talking about it is not that the banks are not doing their job. Banks are doing the job, but they are doing a different job. They are helping the matured companies, looking for product, adding new products and all, or going from one territory to other territory. That is where they are doing. But mostly जो बैंक पैसा देता है वो डेट फाइनेंसिंग होती है, which is a fixed obligation. आप फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के साथ में आप ग्रो नहीं कर सकते. जब आपको यही पता हो कि हमें 100 करोड़ लेना है लेकिन हर साल 8-9 करोड़ का इंटरेस्ट देना है, तो आपको उसी की टेंशन रहेगी. और अगर इमेजिन करिए ऐसी कैपिटल मिलती है 100 करोड़ जो कि आपकी अपनी मतलब वो जो इन्वेस्टर है वो कह रहा है ठीक है तू लगा, मेरे को कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए, अगर तू सक्सेसफुल हो गया तो मेरे को 100 के 120 दे देना या 130 दे देना, अगर नहीं सक्सेसफुल होता है तो आई विल टेक द लॉस, हेयर कट मेरा है, मुनाफा हम दोनों का है. ये कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है, दैट इज वेयर द इक्विटी कम्स इनटू द पिक्चर. अब अगर इसकी बात करें कि स्टार्टअप फेज में हमको कौन हेल्प करता है, तो स्टार्टअप फेज में यूजुअली जो है जब आप बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स कुछ हेल्प कर देते हैं, या तो आपकी फैमिली रिच हेरिटेज के साथ में है तो आप अपना ही पैसा लगा देते हो. कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं, कस्टमर होते हैं जो आपके आइडियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट when you need something which you think that it could be an MNC idea, multinational company idea, or it is going to compete, it needs a platform to be to be shared, or it needs a good amount of marketing expenditure, or it needs a good amount of money for technological acquisition, then you have to go for the risk capital. Now then banks also come into picture, shareholders also come into picture, then VC also and private equity. So these are external sources of funding. एक सबसे important चीज हम लोगों को, हमने जब start किया था presentation, तो we said that we are going to discuss about the basics of private investment markets. Now, what is the difference between private investment markets and the public investment markets? It's important to know कि जब आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट मार्केट की बात करते हैं तो हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं. You guys are from Bombay. Bombay is known for that. We have Bombay Stock Exchange over there, which is in many aspects it is one of the best stock markets, one of the best managed stock markets of the world, not just India but of the world, in terms of the accuracy of the transactions, in terms of the speed of the transactions, in terms of the actual price representation of the stock, technological advances, and also in terms of the number of participants in the stock market. Bombay Stock Exchange is one of the largest, one of the best managed stock markets in the world. You can even the New York Stock Exchange जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कई बार इंस्पायर होता है, बिकॉज इट इज मैनेज्ड इन सच अ वे दैट इट इज एक्चुअली
See, there are many things which are helping our stock markets to survive and grow. One, of course, is the regulatory platform. जो सेबी है हमारे यहाँ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो हमारे यहाँ की स्टॉक मार्केट्स को बहुत सपोर्ट करती है. हम लोग बहुत विजिल हैं. पास्ट में जो आपने सुना है हर्षद मेहता स्कैम एंड देन केतन पारेख एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज काइंड ऑफ स्कैम्स की प्रोबेबिलिटी आज की डेट में बहुत लो है. Because at that point of time we started, and when something gets started, there is a possibility that okay, somebody will find out a loophole and do something. But now it is near to impossible. Anything that you do, or there are many checkpoints, risk management measurements which are there in the system, which will won't let this happen. Insider trading जो होती थी पहले कि भैया आप कंपनी के बोर्ड में बैठे हो, आपको पता है कि कंपनी नई मार्केट में जा रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, आपने वो पब्लिक में लीक कर दिया, आपको आपके दोस्तों का या आपके फ्रेंड्स का जो है वो फायदा हो गया. सो सच थिंग्स आर नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ बिकॉज देयर आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज. नाउ तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये पब्लिक मार्केट है जहां पब्लिक का पैसा लगा हो, पब्लिक अपना परचेज कर सकती है, बेच सकती है, उसको पब्लिक मार्केट बोलते हैं. तो स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पब्लिक मार्केट. स्टॉक मार्केट में केवल वही शेयर्स लिस्ट होते हैं, वही शेयर ट्रेड होते हैं जो लिस्टेड होते हैं. और लिस्टिंग के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू अ प्रोसेस wherein you have to apply to SEBI. First of all, your business should be profitable, your brand should be profitable, your image among the investors, among the stakeholders, which is customer, the employees, and the employees and the investors and bank has to be very good. I'm sorry. When you are able to do that, when you are able to reach that level, that is when you go to SEBI and file a DRHP. That is when you file a DRHP. आप वहाँ पे एक first application file करते हो that you show an expression of going public. Then SEBI उसको evaluate करती है और फिर उसके बाद आपको listing का approval देती है. Many cases SEBI rejects also. लास्ट 1.5 ईयर से हम देख रहे हैं कि हर एक महीने में नई एक कंपनी लिस्ट हो रही है स्टॉक मार्केट में. जोमेटो लिस्ट हुई थी, अभी हमारी हैप्पी माइंड्स लिस्ट हुई थी. आई एम श्योर कि यू माइट बी अवेयर ऑफ सो मेनी कंपनीज व्हिच आर देयर. एंजल ब्रोकिंग लिस्ट हुई थी. एंड मेनी कंपनीज गॉट लिस्टेड फ्रॉम एवरी सेक्टर, फ्रॉम फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फ्रॉम software industry, from consumer tech industry. Then you have FMCG companies also getting listed. Listing होने का मतलब क्या है? Listing होने का मतलब है you get an access to public market. कि कल को आपको अगर stock market में अपना initial public offer तो आप करते ही हो when you want to dilute your equity. जब आप अपनी equity को dilute करना चाहते हो, अपने shareholders बढ़ाना चाहते हो, तब आप stock market के पास में जाते हो. स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, आपकी कंपनी के पास पैसा आता है, आप कंपनी को एक्सपैंड करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो नए, और नई मार्केट्स में रीच करते हो. दैट इज व्हेन यू डू दैट. सेम इज द केस. अब ये तो खैर मैंने इक्विटी की बात बताई आपको. ऐसे ही बॉन्ड मार्केट भी होती है जहां पे आप पैसा लेते हो मार्केट से, लेकिन इंटरेस्ट पे लेते हो. और दोज आर पब्लिक बॉन्ड मार्केट्स वेयर even public also, common people also having 1, 2, 3 crore. अच्छा, बॉन्ड मार्केट्स में टिकट साइज थोड़ा ज्यादा होता है. यू गेट टू इन्वेस्ट फ्रॉम 10 लाख रुपीज. मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है. इट गोज अप टू 500 करोड़. स्टॉक मार्केट में यू कैन इन्वेस्ट 1 शेयर ऑल्सो. 10 रुपए का भी शेयर है, 15 रुपए का शेयर चल रहा है आजकल येस बैंक का, आप वो भी खरीद सकते हो. तो बॉन्ड मार्केट थोड़ा हायर साइड में होती है, स्टॉक मार्केट थोड़ा लोअर साइड में होती है, बट बोथ ऑफ दीज आर पब्लिक मार्केट्स. हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मार्केट की. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मार्केट थोड़ी हाई एंड की मार्केट होती है. जैसे कि हमने बात करी अभी प्राइवेट इक्विटी की और वेंचर कैपिटल की. ये दो एक्चुअली में वेंचर कैपिटल इज अ सबसेट ऑफ प्राइवेट इक्विटी. ये जो आप देख रहे हो लार्जर साइन, जो रेड कलर का सर्कल देख रहे हो, विच इज एक्चुअली अ लार्जर
sphere of private equity, under which venture capital comes. So venture capital is actually a subset of private equity. I will give you a difference between these two. अब है क्या चीज की जैसे बॉन्ड मार्केट है जहां पे हम पैसा देके इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे ही प्राइवेट डेट मार्केट्स भी होती हैं जहां पे बहुत लार्जर इन्वेस्टर्स है जिनके पास 15-20 करोड़ ऐसे ही लोन देने के लिए है. दे ऑल्सो गो अबाउट इट. सो दे आर रेडी टू गिव यू, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, बट दे विल सीक एन इंटरेस्ट आउट ऑफ इट 8 to 9%, 10%. ऑफ कोर्स बैंक से थोड़ा ज्यादा ही वो एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज बैंक में अगर वो रखते हैं तो उनको रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है. जब आपकी वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको थोड़ा रिस्क, दे आर रेडी टू टेक दैट रिस्क, सो दे विल एक्सपेक्ट मोर रिटर्न आउट ऑफ इट. सेम गोज विद द प्राइवेट मार्केट्स. अगर प्राइवेट स्टॉक मार्केट में वही पैसा कोई लगाता है तो वहां पे उसका रिस्क कम होता है. अगर वो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल में लगाता है तो वहां पे रिस्क उसका ज्यादा होता है. तो ऑफ कोर्स द रिटर्न एक्सपेक्टेशन हैज टू बी मोर, एंड योर बिजनेस मॉडल and your entire business should be in such a way that it should attract the investors. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनिशियल वे में तो आप जा सकते हैं कि when you have an idea, you want to start something, you are going to investors and asking money. But at every stage of your business, if you are doing that, that actually degrades the value of your business. That means कि आपका business इतना अच्छा ही नहीं कि हर बार आपको पैसा मांगना पड़ रहा है. At some point of time, your business should be placed in such a way that your business is able to attract money out of their own choice. Investors आपके पास में आए, जैसे अभी आपको एग्जांपल दे दूं कि आई एम डीलिंग विद लॉट ऑफ कंपनीज एंड ऑल. सो देयर आर मेनी ब्रांड्स वेयरइन हमें अपने क्लाइंट्स को पुश करना पड़ता है कि आप इन्वेस्ट करिए. कई बार ऐसी ब्रांड्स होती है जहां पे क्लाइंट हमको पुश करता है कि हमें चाहिए इसमें स्टेक, एंड वी हैव टू फाइट इट. आई कैन नॉट नेम द ब्रांड एज ऑफ नाउ, बट आई एम फाइटिंग for last 20 days. I'm fighting for 2 or 3 brands जहां पे हमको स्टेक चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज प्राइवेट मार्केट्स में अवेलेबल है, पब्लिक मार्केट में नहीं है. कल को अगर आप कहो कि आई एम इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन बाइजू, क्या मैं 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकता हूँ? सॉरी, यू कैन नॉट स्टार्ट, बिकॉज बाइजू इज नॉट अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इट्स अ प्राइवेट फर्म. सो ऐसा नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका आपके पास में नहीं है, बट यू हैव टू बी, थोड़ा सा जेब मोटी होनी चाहिए और आपका टिकट साइज बड़ा है इसमें. तो बाइजू में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मल्टीपल करोड़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इन्वेस्टमेंट कम्स थ्रू वेंचर कैपिटल. सो आई एम गिविंग यू एन पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसे ही फार्मेसी में अगर आप चाहो कि हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यह तो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, सर ने बताया है, लेकिन सर सॉरी ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है अभी, तो हम आपको इन्वेस्टमेंट की मतलब इसमें अभी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते. बट देयर आर मेनी वेंचर कैपिटल फंड्स, alternate investment funds through which we can take a stake in these companies. That is where the venture capital funds and firms and they come into the picture. तो अब हम थोड़ा सा जरा प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड ये कंपनी के कौन से स्टेज में आती हैं. सॉरी, अगर आप ये ग्राफ देखें तो ऑन द एक्स साइड आप टाइम देख रहे हो, वाई साइड में रेवेन्यू देख रहे हो, और ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो ये कंपनी की ग्रोथ है. वैल्यू ऑफ डेथ अगर आप देख रहे हो नीचे, तो उसमें वैल्यू ऑफ डेथ जो लिखा है इज एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन. मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, क्या बिजनेस स्टार्ट करते हैं. आपने स्टार्ट तो किया, आपने इनिशियल कैपिटल डाली, रेवेन्यू पॉजिटिव तो नहीं हुआ, निगेटिव रहा, लेकिन ज्यादातर कंपनीज के ज्यादातर आइडियाज जो हैं इसी वैल्यू में ही खत्म हो जाते हैं. जो ब्रेक इवन करते हैं, विच इज एक्चुअली दिस साइड विच यू आर एबल टू सी, ब्रेक इवन करते हैं, फिर वो आगे की जर्नी में होते हैं, कंपनी जाती है. अगर आप ये देखो तो यहाँ पे पब्लिक मार्केट आ गई है, ये आईपीओ की बात हो रही है, पब्लिक मार्केट है. इस वर्टिकल लाइन से लेके इस वर्टिकल लाइन से, मतलब फ्रॉम ब्रेक इवन टिल पब्लिक मार्केट, the companies deal only with the venture capital firms and private equity firms. अब है क्या चीज कि ये जो आप ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच का जो आप जर्नी देख रहे हो, इस बीच में कंपनियों को वेंचर कैपिटल फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का जरूरत पड़ता है. अब ये कई स्टेजेस में आती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ. अर्ली स्टेज कई कंपनियां होती हैं जो वेंचर कैपिटल फंड्स विच आर अर्ली स्टेज वेंचर्स.
जिनको कि हम बोलते हैं फॉर्मेटिव स्टेज फाइनेंसिंग। जब आपके पास में कोई आइडिया आया, जैसे कि अब किसी के पास आइडिया आया था भावेश अग्रवाल जी के पास में कि यार इंडिया में टैक्स, आप लोग बॉम्बे के हैं तो आप लोग जानते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू फाइंड अ ऑटो टैक्सी। नाउ इमेजिन एक दुनिया ऐसी जबकि आपके पास में ओला हो ही ना। तो अब इनिशियल वे में जब भावेश अग्रवाल जी ने सोचा होगा कि लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस ऑफ आवर कंट्री, तो अगर वो समय किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं और वो इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट करता है तो उसको एंजल इन्वेस्टिंग बोलते हैं। बिकॉज एंजल वर्ड आप समझ रहे हैं कि एक एंजल है वो इनिशियल वे में। बिकॉज आज की डेट में ओला, बाइजू और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें जिसने भी इन्वेस्ट किया है वो एंजल ही है। बिकॉज कंपनियां मैंने जहाँ पे आप उसको होंगे वो अच्छा, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, मतलब जब हमारे पास रेडी है और ऑन बोर्ड होने के लिए तब हमारे पास ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। जब हमको मार्केट होगा कि ये ऐप तैयार है, आपको डाउनलोड करिए, बोथ ड्राइवर एंड द एंड यूजर आपको डाउनलोड करिए, उसका यूज करना स्टार्ट कीजिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मार्केटिंग की बोर्डिंग तो बड़ी लगी है, दिखा तो ऐप एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, आपको यूट्यूब पे सारे चीजों की चाहिए होती है, वो स्टेज फंडिंग कहलाती है, वेंचर कैपिटल्स को प्रोवाइड। लेटर स्टेज फंडिंग जो है वो जैसे कि अब मान लीजिए ओला, Excuse me, Anubhav sir, your voice is not clear. The voice is cracking. I suppose there is some network issue. I'm sorry everyone. I hope there is some network issue from sir's side. He'll connect back. Just wait a moment. I'm sorry everyone. Please stay in the webinar. He's joining back. There was some network issue at that point. Yes, sir. You are connected am I now. audible? Yes, So yes. how long have you Sir, just a few minutes back.
So you could Okay, share okay. Thank your you. screen again. Thank you. Thank you. Just a second. I'm sorry, this power So cut. it's okay. It's a network glitch. It's not in our hand. Okay. Is it No, sir. visible now? No, sir. It's not visible. Yes, you need to. Yes, sir. Yes, sir. It's visible now. It's visible now, right? Yeah. Thank you. Okay. So, Shweta, I was on this stage of venture capital. So I Yes, was sir. telling about the stages of Yes, venture sir. capital. So the You. first stage, which consists of angel investing. Am I audible now? Yes, sir. You're audible. If you could. Hello. Yes, sir. You're Okay. audible. Okay. 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 Is there anything that you want from my side? No, sir. You can continue. Okay. ओके थैंक यू सो फॉर्मेटिव स्टेज जो स्टेजेस हैं वेंचर कैपिटल की ये 3 हैं फॉर्मेटिव है लेटर है मेजेनाइन फॉर्मेटिव स्टेजिंग में आप आइडिया लेके आते हो दैट इज व्हेन यू गो टू एंजल इन्वेस्टर एंड यू गेट द मनी सीड स्टेज में यू गो फॉर अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट इज व्हेन यू नीड मार्केट रिसर्च टू डू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट थर्ड स्टेज जो आती है इसकी अर्ली स्टेज जिसको भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट कहते हैं नाउ दैट इज व्हेन यू ऑनबोर्ड द फर्स्ट क्लाइंट सेकंड में आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन जब स्टार्ट करते हो मैंने एग्जांपल दिया था ओला का वेयर इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन बिगिंस एंड यू एक्चुअली स्टार्ट पुटिंग द होल्डिंग्स एंड ऑल जब आप ये देखना चालू करते हो प्लस आप एक जैसे कि ओला ने अभी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है वेयर इन दे आर लॉन्चिंग electric scooters and all. So they are moving from services oriented company to a manufacturing plant now. So that is when you require financing. So it is called later stage financing. Now mezzanine is called a capital that is required for company to go public. आप IPO लाना चाहते हो, you want to go to public and you want कि हाँ भाई कोई हमारी मदद करे उस समय जो because you are operating in a space wherein you have a limited access to customers, limited access of investors. Now you want to go beyond your comfort zone and you want to go public. You want your product to be known from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Arunachal Pradesh. That is when you require more amount of funding and you go for a mezzanine state fund financing. Ab hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You're audible. Yeah, can you put yourself on mute? There is a noise that is coming actually. Yeah. So अब होता क्या है ये जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं इनको जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं इनको भी ये भी पैसा इन्वेस्टर से लेती हैं एंड देन दे एग्जिट आफ्टर व्हाइल तो अगर आप देखोगे कि जो जोमेटो जिसने इन्वेस्ट किया था जोमेटो में उसने मतलब इसी साल में जो आईपीओ आया था तो उन्होंने एग्जिट कर दिया था तो ये जो इन्वेस्टमेंट के फंड्स होते हैं ये आप मान के चलिए दे आर ड्यूरेशन ऑफ 10 इयर्स 10 साल के ड्यूरेशन के फंड्स होते हैं सो जो इन्वेस्टर इसमें पैसा डालता है इन फंड्स में दे हैव टू वेट फॉर 10 इयर्स टू गेट एन एग्जिट नाउ एग्जिट स्ट्रेटजीज आर प्लेंटी ट्रेड सेल भी करता है कंपनी मतलब मैं ओला का एग्जांपल ले रहा हूं कि मान फाइनेंसिंग करवाई उसके बाद लेटर स्टेज की फाइनेंसिंग करवाई अब जो बायर है जिसने उनके परचेज किया था उसको भी तो कुछ रिटर्न चाहिए तो वो क्या करेंगे कि एक उन्होंने स्ट्रैटेजिक सेल कर दी जैसे व्हाट्सएप था व्हाट्सएप में सिक्वाया कैपिटल विच इज हम अभी आपको बताएंगे ये सिक्वाया कैपिटल है व्हाट्सएप में सिक्वाया कैपिटल ने इन्वेस्ट किया था और दे वेटेड फॉर मोर देन 4-5 years देन इन द ईयर 2019 व्हाट्सएप ने अपने आप को सेल कर दिया था $19 बिलियन में इसको फेसबुक को सो अगर वो सेल जो है वो जो इनिशियल जो सेल हुई है उसमें जो वेंचर कैपिटल थी वो थी सिक्वाया कैपिटल को ऑलमोस्ट 50-60x का फायदा हुआ था मतलब उन्होंने अगर ₹1 लगाया तो उनको ₹50 का रिटर्न मिला था तो दैट इज वेयर द वेंचर कैपिटल फर्म्स जो कि इन कंपनीज को हेल्प करती हैं ये पैसा बनाती हैं और इन कंपनीज में जो पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं I'll come on to that तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती हैं
ये मेजरली 5 तरीके से एग्जिट करती हैं: ट्रेड सेल, IPO, रिकैपिटलाइजेशन, सेकेंडरी सेल्स, एंड समटाइम्स दे हैव टू राइट ऑफ द बिजनेस बिकॉज बिजनेस ही ठप हो गया, बिजनेस ही बैठा हुआ है। जैसे आप एग्जांपल के रूप में आज की डेट में देखें, क्विकर का ऐड आप एक साल पहले देखते होंगे कि यू कैन सेल एनीथिंग ऑन क्विकर, बट it has come, whatever the success promised the initial, किसी कारण से वो नहीं चला तो वेंचर फंड्स में लॉसेस भी होते हैं। तो दैट व्हेन दे राइट ऑफ लिक्विडेट द जितनी भी होल्ड होती है वो राइट ऑफ करके अपना बेच के निकल लेते हैं। अब इंडिया में जो कैपिटल फॉर्म है, अभी तक तो हमने जो बात की biggest company, these are those companies: Square Capital, Network, Bloom Ventures. Now these are some of the biggest companies of India. हम एक दो एग्जांपल लेंगे, ज्यादा सिक्वायर कैपिटल में आप ये देखो कि अब जैसे आप बैंकर के पास में, किसी बैंक के पास में जाते हो तो कोई बैंक आपको लोन देता है तो दे हैव अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। दे नो कि हाँ भाई आपकी बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। दे ओनली नो हाउ टू रीड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वो आपका जो कैश फ्लो है, आपका बैलेंस शीट है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस है, वो क्या है, प्लस आपका वो बेसिक सिबिल चेक करेंगे कि भैया आपने पहले लोन लिया है तो कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया है। But when it comes to companies like Sequoia Capital, which is a venture capital firm, they are expert of businesses as well. So not only they know about the financial statement, they also have a good understanding of what is. So they know the pulse of the economy. They know some of them are technical experts, some of them are managerial experts, some of them know what is going to happen in the future, because they are aware of the policy decisions that are being taking place by the government, central and state government. So they are not just the investors like a banker, जो कि आपके केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है। आप में से कई लोग ने एजुकेशन लोन लिया होगा, तो एजुकेशन लोन के लिए आप बैंक गए होंगे तो आप लोगों को यही पूछा गया होगा कि भैया अपने फादर की ITR दे दो, उनकी सैलरी स्लिप दे दो, उनका बैंक स्टेटमेंट दे दो, दैट्स इट। दे डोंट, उन्होंने ये भी नहीं पूछा होगा कि आप जो कोर्स कर रहे हो उसका आगे क्या करना है, बिकॉज दे हैव अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट, कि लोन कैसे देना है। वेंचर कैपिटल आर दीज गाइज हु आर एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स। सो अगर कोई वेंचर कैपिटल जो कि टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को, कंपनी हर एक एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो FMCG की कंपनी को भी फंड कर रहा होगा, टेक्निकल IT कंपनीज को भी फंड कर रहा होगा, वो फिनटेक बेस्ड कंपनीज को भी फंड कर रहा होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ फ्यू डोमेन्स ओनली। बट सिक्वायर कैपिटल की आपको मैं कुछ मतलब एग्जांपल बता दूं। इनके जो फाउंडर हैं वो GV शंकर है, द वन हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। GV शंकर है, IIM अहमदाबाद का ग्रेजुएट है और 2006 में इन्होंने फर्म डाली थी और आज की डेट में $4 बिलियन का पैसा बांट चुके हैं स्टार्टअप्स में। $4 बिलियन इज अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज जो इन्होंने लेंड किया हुआ है। सो इमेजिन हाउ मच मनी दे हैव गिवन टू द, सो दे आर एक्चुअली रनिंग देयर ओन प्राइवेट बैंक, व्हिच यू कैन से many of the private banks are not having this much large book of lending. So Sequoia Capital is quite a large company, very large company. अब है क्या, अकेले GV शंकर के बस की बात नहीं थी कि अगर वो इतने बड़ा फंड बना पाते, तो उसे he needed few other smart people, like-minded people, those who wanted to work with him. So अभिषेक आनंद है इनके पास में, जिन्होंने एक कंपनी बनाई थी टैक्टाइल, जो कि फेसबुक ने खरीद ली। और वो पहले एक्सट्रीम राइट की बात कर रहा हूँ, पहले वो फेसबुक में प्रोडक्ट मैनेजर हुआ करते थे। मोहित भटनागर है जो कि पेमेंट और कंज्यूमर पेमेंट बैंक्स में इन्वेस्ट करते। इन्होंने एक डील कराई थी डेली हंट। अगर आप अपने फोन पे ओपन करते हो तो आप देखते होगे ब्राउजर में डेली हंट करके आता है, आपकी लोकल न्यूज वो बताता है, प्लस
कुछ इंटरनेशनल मसालेदार न्यूज़ भी आपको पढ़ने को मिल जाती है वहाँ से। जोमेटो इज ऑल्सो वन ऑफ देम, जोमेटो में भी इन्होंने इन्वेस्ट करवाया था। ऐसे ही राजन आनंदन है जो कि इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थे गूगल में। शैलेंद्र सिंह है जिन्होंने की काफी सारी डील्स कराई हैं इनकी, .com, पाइन लैब्स, प्रैक्टो, ऑल दीज कंपनीज इन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाए। दूसरी कंपनी जो हम बात करेंगे आज वो है चिराटे वेंचर्स। ये वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनीज ऑफ इंडिया है। ये 2006 में अगेन दिस वाज फॉर्म और सुधीर सेठी ने स्टार्ट किया था। आज की डेट में आपको एग्जांपल बता दूं, इंडिया में सबसे, इनके बिना पॉलिसी बाजार नहीं होती, इनके बिना फ्लिपकार्ट नहीं होती, इनके बिना लेंसकार्ट नहीं होती, इनके बिना मिंत्रा नहीं होती, इनके बिना फर्स्ट क्राई नहीं होती, क्योर फिट नहीं होती। ये रेप्यूटेड क्यों है? क्योंकि रतन टाटा ऑफ कोर्स मतलब ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ दिस कंपनी, सो दे आर मतलब known to they are quite a known people in their own space. Now important ये है कि वेंचर कैपिटल फर्म में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास आइडिया होता है, स्टार्टअप बनाते हैं वो, और वो वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास में जाते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास में अपना भी पैसा होता है और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर से वो पैसा लेती है, उनका वो पैसा मैनेज करती है और एग्जिट कब करती है? जब वो आईपीओ थर्ड स्टेज पे आती है, जहां पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आते हैं, वो पब्लिक मार्केट पार्टिसिपेशन करा के एग्जिट कराते हैं। मैंने आपको और भी तरीके बताए थे जहां पे हो सकता है कि ये आईपीओ ना जाए, ये किसी और कंपनी को बेच दे, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था। इट वॉज नॉट अ पब्लिक डील, इट वॉज अ प्राइवेट डील, बट इट वॉज अ ह्यूज डील। अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको कौन मदद करता है? कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि भैया आओ, हम स्टार्टअप करो, आप नई कंपनी डालो, हम आपको टैक्स के बेनिफिट्स दे देंगे, पहले 3 साल 2 साल आपको टैक्सेस नहीं देने होंगे कंपैरेटिवली ज्यादा। तो आप मोटिवेट होते हो कि अच्छा ठीक है चलो लेट्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट टू मतलब ऑन अ लाइटर नोट, यू डोंट एक्सपेक्ट अ स्टार्टअप इन अ कंट्री लाइक अफगानिस्तान। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि तालिबान जैसी गवर्नमेंट है वहां पे और वो आप फिर भी स्टार्टअप कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज यू नीड एन इकोसिस्टम, यू नीड अ प्लेस वेयर इन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ थ्रेट। आपको लाइफ की थ्रेट नहीं है, आपको पैसे की थ्रेट नहीं है, एंड देन दैट इज व्हेन यू दैट इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ इट। इसीलिए आप ये गेस कर सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्टार्टअप वैली जो है वो सिलिकॉन वैली है, बिकॉज देयर आर गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फायदे पहुंचाने की बात करती है वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इजी कैपिटल अवेलेबल है, और उसके बाद में अगर आप देखें तो जो सबसे लार्जेस्ट है वो यूरोप में है, यूके में है, और तीसरा है तेल अवीव, मतलब इजराइल में है। इजराइल में स्टार्टअप्स का बहुत काम है। तो वेंचर कैपिटल फर्म भी वहीं पे ग्रो करती है जहां पे स्टार्टअप का माहौल अच्छा है। ऐसे ही वी आर नॉट वेरी फार बिहाइंड। 2018 की रैंकिंग है, 18th रैंक थी हमारी बैंगलोर में। सो एक चीज आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द वेंचर कैपिटल फर्म्स आर इन बैंगलोर, देन कम्स मुंबई। मुंबई इस मामले में नहीं है नंबर 1, बैंगलोर नंबर 1 है, जहां पे सबसे ज्यादा फर्म्स भी हैं, वहीं पे स्टार्टअप है और वहीं पे ही सबसे ज्यादा वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं। ओके, अच्छा एक चीज अभी हम लास्ट पार्ट में आते हैं ये इसके कि आपको एज ए स्टूडेंट कौन से 3 कोर्सेज पे फोकस करना चाहिए इफ यू वांट टू वेंचर इनटू वेंचर कैपिटल। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ वेंचर कैपिटल एम्प्लॉय और यू वांट टू सी एनीवेज। आप ये मान के चलो आज की डेट में अगर आप वहां पे हो, आप एमबीए कर रहे हो एंड बीबीए कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन में फाइनेंस के कोर्सेज कर रहे हो, you will eventually either you will land up into a startup company, या तो आप स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहे होगे या स्टार्टअप कंपनी को फंड करने वाली कंपनीज में काम कर रहे होगे। तो कहीं से भी आप रुको, मतलब escape नहीं हो सकता। you have to deal with these kind of companies because the new jobs that are coming in the market, they are coming through these companies only। जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, अगर जो जिनकी बात करें तो आप ये मान के चलो जो सबसे बड़ी कंपनी है सिक्वायर कैपिटल। ये बहुत डिसहार्टनिंग फैक्ट है जो कि मैं आपको बता दूं। एक प्लस पॉइंट है, एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है, मैं पहले नेगेटिव पॉइंट बताता हूं कि ये कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं होती।
आप एक्सपेक्ट मत करो कि कोटक बैंक की तरह आपको हजारों एम्प्लॉइज हैं वहां पे और आप वहां पे काम कर सकते हो। ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 18 लोगों की कंपनियां होती हैं, बट द पे स्केल इज फार फार मोर देन दी बैंक कंपनीज, जहां पे आप स्टार्टिंग कर रहे हो 20,000 50,000 रुपीज से। इन दीज कंपनीज यू स्टार्ट विद 40-50 लाख रुपीज अ ईयर। इस तरह के पैकेज में आप स्टार्ट करते हो और 15-20 लाख 50 लाख से 30 लाख से कम के पैकेज में आप इनिशियल जॉब भी होती है, वो भी उससे उससे हायर स्टेज पे होती है, बिकॉज यू आर एक्चुअली एडिंग अ वैल्यू, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क compared to a normal bank employee who is just collecting checks or or writing applications or doing a transaction on the computer. You are actually adding a lot of value to the company. तो इसके लिए मैं यही कहूंगा, अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट बनना चाहते हो या उस फर्म में हायर होना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस देखना पड़ेगा. दिस इज वन सब्जेक्ट वेयर इन यू नीड टू हैव अ मास्टरी ओवर. ये कॉर्पोरेट फाइनेंस आप लोगों के आई थिंक ग्रेजुएशन में अभी नहीं होगा, बट जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे, हो सकता है कुछ कोर्सेज में कॉर्पोरेट फाइनेंस हो. आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिलेबस ऑफ योर कोर्सेज, बट होगा भी तो प्रिलिमिनरी स्टेज में होगा. बट यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इसमें आपको मास्टरी करने में 2-3 साल लगेंगे, बट यू नीड टू हैव अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. सेकेंड ऑफ कोर्स इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आप अकाउंटिंग के बिना तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि कोई बड़ी कंपनी की वर्थ आप समझ सकते हो, उसके बैलेंस शीट को समझ सकते हो. भाई आप वेंचर कैपिटल हो, आप किसी को पैसा देने जा रहे हो, किसी की कंपनी में इन्वेस्ट कराने जा रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उसकी कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसकी कंपनी में एसेट वैल्यू है कि नहीं है, उसकी कंपनी में लायबिलिटी कम है कि नहीं है, या वो फंड कंपनी जो है अकाउंटेबल है कि नहीं. कंपनी को अकाउंटेबल होना भी बहुत पड़ता है. अकाउंटिंग अगर नहीं है उसके पास में, देन इट्स नॉट एट ऑल यूजफुल to invest in those companies. So for that you need to have an understanding of financial accounting. Last and most important is securities analysis. See, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो एज ए बैंकर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपने लोन दे दिया और किस्तें बना दी और आपकी लोन की किस्तें आ रही हैं. आप किसी कंपनी में इक्विटी इन्वेस्ट करवा रहे हो. So you need to have a fundamental analysis कि भैया वो जिस सेक्टर में जिस स्पेस में काम कर रही है वहाँ की फंडामेंटल एनालिसिस क्या है. उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो. यू अंडरस्टैंड कि अगर ये स्पेस पब्लिक हो जाता है तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ द स्टॉक ऑफ दिस कंपनी टू गो इन अ हायर स्पेस वैल्यूएशन. क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कोर्स दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द any kind of security analysis that you do. तो इसमें आपको एक्सेल में अच्छा होना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर में अच्छा होना पड़ेगा. देयर आर फ्यू सॉफ्टवेयर्स आल्सो व्हिच आर हेल्पिंग एज ऑफ नाउ. तो जैसे कि एग्जांपल आपको बता दूं, आर है, पाइथन है, दीज लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट. सो ऑल इन ऑल, अगर आप वेंचर कैपिटल आपको स्पेस अच्छा लग रहा है, जो कि आज की डेट में इट्स अ बजिंग वर्ड. I'm sure कि being in a Mumbai you are guys are from Mumbai and you Maharashtra से आप हैं, तो आपको ये पता होगा कि venture capital firms जो हैं they are doing a lot better since COVID has come. आगे भी इसका स्पेस अच्छा होने वाला है. ऑफ कोर्स सबसे अच्छी बात, इंपॉर्टेंट वही चीज मैंने आपको बताया कि ये आइडियाज की कमी जो है ना वो कभी नहीं रहने वाली. एज लॉन्ग एज वी हैव ह्यूमन नीड, एज लॉन्ग एज वी हैव ह्यूमन बीइंग्स ऑन द प्लैनेट, the ideas will keep on coming, and with a conducive government's policy and social governance, आपको वो हमेशा opportunity मिलेगी, and that is when you will be required to play a role of a venture capitalist. Any questions? Now I'm done. Thank you so much, sir. This was a in-depth knowledge about the venture capital, and I'm very sure that our students will be able to know more about this particular career. They will try to learn how to get into it. So, questions are welcomed. If any one of you want to ask anything, you can please unmute yourselves and you can ask. Yes, anyone?
If you want, if you're not comfortable unmuting, you can also write in the chat box. I hope you students should avail this opportunity to know more and to ask from sir, because he is with us today. Yes, students? Shweta Sharma from TYBMS. Anubhav sir, she wants to ask, sir, is there any specific course for being in venture capitalist? See, am I audible now? Yes, sir. See, आप अभी किस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हो? Shweta, if I ask you. She is in third year BMS. She has taken finance as a elective. See, I told you, it's not a space wherein you can have all. Even the most experienced person in venture capital firms can't say that he has an expertise on all the areas. So what I said is, आप केवल ये 3 courses पे focus करो: security analysis, corporate finance, and financial accounting. First, get a mastery over it. Then, to get a job, you can do later on, you can do a specialized course wherein you can have MBA finance. So if you do an MBA finance, that itself is sufficient to become a venture capitalist, to get employed by the venture capitalist. To become a venture capitalist, you need to have a lot of money. I'm sorry, if you're, don't take me wrong. I'm saying if you want to get hired by a venture capitalist firm, you need to have a sound understanding of these 3 basic subjects, courses: corporate finance, then financial accounting, then you need to have a sound understanding of securities analysis. Okay. I hope this clears your doubt, Shweta. Anubhav sir, just a small request. Could you please just stop sharing so that the screen will be... Yeah, thank you so much. Anyone else who wants to ask anything from sir? Hi, I have a question. My name is Saurabh. Yeah. Hello, Saurabh sir. It's a privilege that you have joined our webinar. To tell you everyone that Mr. Saurabh Saini is joined us from Singapore and he's working as a consultant. Thank you, sir, for being a part of the webinar. Right. Thank you. Thank you. I think it was quite informative, and I think I really enjoyed the interesting stories that Anubhav has shared with respect to all the different unicorns. So my question is a little bit more fundamental in terms of, how these venture capital funds work, in the sense that, we always hear the good stories. We always hear the Ola, we always hear the Zomato, those who are doing very well. Whereas these venture capital funds may be investing in a lot of other, upcoming startup companies, but not all of them may be successful. So I would like to know, just a little bit about how they sort of manage that risk, because not every company is successful. Maybe out of 10, one company may get successful, but the others may, not be as successful. So if you can just highlight that, that will be very interesting to hear as well. Am I audible now? Yes, sir, you are. Okay. Thank you, Saurabh. Thank you for joining this session. And it must be 3 p.m. in Singapore, and I'm really grateful that you took your time to join this webinar. So this is a very important question. Actually, you need to know that I've already shared a lot of pros about this sector, but there are many cons also. To give you an example, there are only, to give you statistics, only 5% of the venture capital funds have actually returned more than the money that they have taken. Now, it's a data worldwide, and not more than 10% have actually returned the money that they have taken. But they have taken a haircut while returning the money.
how these venture capital firms manage the money, they actually work on the Pareto principle. So even if suppose they have 5 companies in a fund, they've made a portfolio of 5 companies, and उनमें से एक भी चल गई तो वो बाकी सबका हिसाब पूरा कर देती है. बाकी अगर 1-2 कंपनियां ऐसी होती हैं उसमें उनके पोर्टफोलियो में जो नहीं चलेंगी, so they work on a Pareto principle. But still, मतलब for a country like India, because we have such a large consumer base, मतलब you can see not more than 10-15% people are having debit and credit card. There is a huge demand for credit card and debit card, which is a pent up demand, and it will be definitely there. So can you imagine a company like Pine Labs not working in futures? I don't think so. So the venture capital firms, what they do is they do a macro analysis, then they go for a portfolio which has impact, and they have so they make a portfolio out of it. अगर दिया है तो केवल 5% कंपनीज ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जिन्होंने 100 रुपए के 150-200 बना के दिए हैं आपको, और केवल 10% ऐसी कंपनी है जिन्होंने 100 के 100 वापस किए, 100 में 80 भी वापस किए, 100 में 60 भी वापस किए. क्योंकि रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि ये स्पेस बड़ा ही हाईली रिस्की है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल है और एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है. बिकॉज आप देखो ना, अगर आप ओला लेके आ रहे हो तो हु यू आर थ्रेटनिंग टू? यू आर थ्रेटनिंग महिंद्रा. आप किससे पंगा ले रहे हो? आनंद महिंद्रा से पंगा ले रहे हो. आनंद महिंद्रा हु हैज अ रेपुटेशन ऑफ very long history of having a very good relationship with the governments, not only BJP government but also the previous Congress government. So if Ola is taking panga with Anand Mahindra, they need to have a lot of courage and luck also to be successful. Yeah. Okay, Thank you, thanks. sir. Yeah, Thank you. thanks, Anubhav. Yeah. Yeah, sir, one more Thank question you, sir. from Thank you. our participant, Ritu Yogesh Kende. She wants to ask, sir, during this COVID situation, is it a safe choice thinking of starting a new business, as there can be lockdown any moment? What are your thoughts on startups during this situations? This is the best time. You will not have a much better time than this to start a business. See, you cannot go to watch a movie. You cannot take your girlfriend outside. You have a lot of fear all the time. You can use your time in a more meaningful way and aspire something which in normal day time you won't be able to do, because you have a lot of things. You have partying, you get calls from your friend circle. आज यहाँ पार्टी करते हैं, आज यहाँ घूमते हैं, आज वहाँ घूमते हैं. आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है ना. So I think this is the best time for you to start a business. And let me tell you very frankly, if you start a business and you fail, you learn a lot more than anybody who's working in a business and having an experience of 10 years. So अगर 1 साल भी आप काम करते हो और वर्क करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, और अगर आप फेल भी हो जाते हो तो you will be far better than anybody who is working for companies for 10 years. And I'm telling you, in this situation, अगर आप अपने रिज्यूमे में ये पुट अप भी करते हो कि you started a venture but it didn't work out. I'm not saying that you will start a business, you will not work out. I'm saying, suppose in that case, it doesn't work out. Even then the industry will embrace you. आज की डेट में इंडस्ट्री और जो लीडर्स हैं, they want people who are risk oriented, who want to move out of their comfort zone. So that is how this industry operates nowadays. Thank you so much. I hope this questions, the answer which sir gave satisfies you, Ritu. So any more questions if anyone wants to ask? Or I suppose sir has given such a nice knowledge to us that all the queries are already resolved. So I would request Neha ma'am to please give a vote of thanks. Thank you, Shweta ma'am. Sir, I would like to thank you to devote your time, your energy, your experience, your knowledge to our webinar, all the staff, to all the college, to all the students here.
Also, I would like to propose my vote of thanks to our BCom department, our coordinators, and the teachers of BCom department, and the IQAC team who has helped us to organize this webinar successfully. I would like to extend my vote of thanks to all the professors, teachers of our college, and who has joined outside the state also. There are many teachers who have joined outside the state, within the state, and also our specialist consultants who have joined internationally. Saurabh sir, thank you everybody. Last but not the least, I would like to propose my vote of thanks to all my students who have joined from different colleges, also from our college. Thank you, sir, so much. And I would also thank my honorable, respected Bhavika ma'am to support us for this webinar, to conduct this webinar. Thank you, sir. Thank you so much, Neha ma'am, for your kind words. We were really very much obliged, Anubhav sir, that you came over here. You spent time with us and gave us such a knowledgeable intake. I hereby, with the permission of Padma ma'am, is our webinar over? Can we stop recording? Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, Saurabh. Thank you, Shweta ma'am, for giving me an opportunity to speak to such a larger audience. And I hope that I was able to do some justice. And after a long time, I was speaking. Maybe in some ways the rhythm got disturbed because of this internet disconnection and all. But hopefully that we'll meet next time also. Sure, and there are more topics, and I would request everybody who is a student here. These are the topics that you should learn more: venture capital, private equity, cryptocurrencies. Next revolution which is coming is cryptocurrencies. So we were at 5 years, 6 years down the line before we were starting for this current revolution in venture capital space. The same is the case with cryptocurrencies in India. Recently, yesterday only there is one new regulation that has been passed by Government of India. And now it is important for all of us to, for the students, as well as for the faculties also, for me also, to know about this asset class which is going to come. Thank you. Before leaving, sir, I would request everyone to please kindly switch on the cameras again. I want to take one more screenshot of you all, so we were together this moment. So just request, kindly switch on your cameras. Students and teachers, everyone, and the senior dignitaries who are with us today. Just a minute, everyone. Yeah, it's taken. Thank you so much for joining. Thanks a lot. Thank you. Bye, everyone. Have a great day ahead. Thank you. Bye. Same to you. Bye. Bye.